Okay, everyone. So let us try with the wedge constraint. Last constraint that we have to study. Important है, like other constraint, ये भी उतना ही important है. In fact, ज़्यादा important. So let us see what we have to do in this case. So normally you will be having a wedge given, and there are going to be some block or rod that would slide on this. थोड़ा बड़ा बना लेंगे इसको, ठीक है ना? And let's suppose there is a rod, there is a block which is sliding on this, which is sliding on this. So let's say there is a rod which is sliding on it. ठीक लग रहा है ना? हाँ, good. So there is a rod which is sliding on it, and let's say कि this rod can only move vertically. There is a fixed. It is fixed with the support from these two sides. It's fixed, It cannot move horizontally. Can only move vertically. Can only move in vertical direction. In vertical direction. Let us say that this angle is theta, and this wedge is moving with an acceleration of, let's say, a naught. It's moving with an acceleration of, let's say, a naught. So a naught is from the ground frame. From the ground we can see that wedge is moving with an acceleration of a naught. So a naught is from ground frame. Write on every piece of detail which I'm writing on the screen. Everything should be noted. बाद में confusion नहीं होगा. A naught is from the ground frame, and because of this movement, this block is going down with an acceleration of a. A is also from the ground frame. A is also from the ground frame. A is also from the ground frame. Now the question is, find the relation between A and A naught. Hello Shraddha, how are you? Now, okay, so we have to find the relation between A and the A naught. Well, this is called a wedge constraint. Why it is called constraint? Because the acceleration of the wedge and the blocks are interrelated. If suppose the wedge is not moving, agar wedge move nahi karega, then this block will not move. The block would not accelerate. It means the acceleration of the wedge and the blocks are interrelated. That's why we call this as a constrained motion. So basic definition of constrained motion I have told you. एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि acceleration of one body depends upon the another body. They are interrelated. Then these kind of motions are called constrained motion, and because they have constraints on the parameters of motion, which is acceleration, velocity, displacement, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं constrained motion. एक बात समझो, if I look it from the ground frame, मेरे को A दिखेगा, A naught दिखेगा, but the finding the relation of A and A naught would be slightly difficult if we observe it from the ground frame. Then what is the solution? What we can do? We should look at this from the wedge frame. We should look it from the frame of the wedge. Now that is going to make your life more simpler in order to solve it. So when I say I'm going to look it from the frame of wedge, it means I'm standing on the wedge itself. मैंने wedge पे खड़ा हो गया. Now just imagine, अपने imaginations के पंख को खोलो और देखो कि अगर आप wedge पे खड़े हो, इसका motion, the block का motion would appear to you in a way that you will feel कि जो block है, it is sliding down on this inclined surface. और तो कुछ दिखेगा नहीं. You will feel that the block is sliding down on the inclined surface, isn't it? Because it cannot move horizontally.
it can move only vertically. तो A जब wedge would move towards right, the block would come down, and if you're looking from the frame of wedge, then it will appear to you that the block is sliding down along the inclined surface. आपको ऐसा दिखेगा जी, अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको दिखेगा कि ऐसे जा रहा है। This is going to be acceleration of the block with respect to wedge. Acceleration of the block with respect to wedge आपको ऐसे दिखेगा अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो। अग्री करते हो? समझ पा रहे हो all of you? Yes, sir. Very good. ये समझ गए तो फिर खत्म कहानी। So the acceleration of the block with respect to wedge should be given as acceleration of the block minus the acceleration of the wedge. Simple relative motion concept. इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले वेक्टर फॉर्म में तो क्या होता है, अगर आप यू स्टैंडिंग ऑन द वेज ना, द वेज वुड अपीयर टू यू एट रेस्ट, वो रेस्ट पे दिखेगा आपको। सो यू विल सी दैट दिस इज गोना बी द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हाट यू से दैट द ब्लॉक, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड, और एक नेगेटिव लग जाएगा इस पे, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इन दिस डायरेक्शन, and this is what you're going to see, which is A over here, which is A over here. Then from the ground frame, if you look at this, it will appear to you moving in this way. ऐसे दिखेगा आपको, है ना जी, ऐसे दिखेगा आपको। So sorry, from the frame of the wedge आपको दिखेगा along the inclined plane वो slide कर रहा है, और तो कोई बात ही नहीं है ना जी। And if it is theta, ये वाला पार्ट थीटा हो जाएगा, थीटा ऐसे ड्रॉ करके देख लो, पैरेलल है ना। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ इसमें आपको, देखो टिक 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 टिक, ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा होगा ना, है ना ऐसे। तो दिस इज थीटा। सो बड़ा सिंपल सा बात हो गया अपने पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये किस एंगल पे दिखेगा आपको? ऑब्वियसली ये एंगल दिखेगा। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ द दिस वन एंड द वेज। तो वेज का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है मैंने क्वेश्चन में? a naught, and this is given as just a. So tan of theta should be what? Tan theta should be a upon a naught. So this is the relation of the a and a naught. बहुत सिंपल सी बात, आपको देखिएगा दिमाग में क्या रखना है कि from the wedge frame, block will appear sliding down the plane, आपको ऐसा दिखेगा, और कहीं कुछ इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टली रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द मूवमेंट। तो ये आपका रिलेशन है बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सीन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। ये सब ग्राउंड फ्रेम से मैंने दो बात नोटिस कर रखा है, मेंशन कर रखा है जी। और ये आपका हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और वो आपको ऐसे दिखा हुआ, ऐसे दिखेगा। दिस इज हाउ इट विल अपीयर टू यू इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द वेज। इतनी बातें आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, आपके ज्ञान चक्षु खोल देंगे। स्वामी बच्चे समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड, चलिए क्विकली नोट इट डाउन, वी गोना गो टू द नेक्स्ट पेज। Okay, Rahul, noted? Yes, sir. Now let's have an example, a very nice example. सब लोग मेरे साथ करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपने घबराना नहीं है ना, क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं है, लाइक इमरान खान से घबराना नहीं है आपने। तो इधर जा, है ना। एक और वेज रखते हैं बच्चों, लेट्स हैव वन मोर वेज, इधर रख दें कहीं ऐसे, है ना। लेट्स हैव वन मोर वेज, लेट अस हैव वन मोर वेज। इसको थोड़ा मैंने मोटा कर देना है, अच्छा दिखेगा, बिल्कुल मेरे जैसा ये रहा, ऐसे, है ना। And it is kept on the ground. It is kept on the, both of these are kept on the ground surface, ऐसे रखा हुआ है। Now let's say I have a cylindrical, और एक rod, cylindrical rod मैंने बीच में रख दिया ना, I kept it like this, which is touching it in this way, ऐसा टच हो रहा है।
अच्छा इसको मैंने कुछ अच्छा यार इसको मैंने कर देना ग्रीन कलर में। दिस इज अ सिलिंड्रिकल रॉड विच इज केप्ट लाइक दिस, जो कि सिलेंडर टाइप है और ये उसको ऐसे टच कर रहा है, दोनों को ऐसे टच कर रहा है ना, ऐसे टच कर रहा है। Let's say this is moving rightward with an acceleration of velocity of 2 meter per second, and this is moving left with a velocity of 1 meter per second. Let's suppose this angle is 30 degree and this angle is just theta, क्योंकि इस एंगल से मेरे को कुछ खास मतलब है नहीं। This is your wedge A and this is your wedge B. मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, find the velocity of spherical rod, जो sphere रख लो, sphere रख लो इसको, of the sphere with respect to ground. कोई इंसान ग्राउंड से इसको देख रहा होगा, then how would he feel that the block is coming down? कैसे उसको देखेगा कि ब्लॉक डाउन पे, sorry, the sphere is how it is coming down. So find the velocity of the sphere with respect to ground, बच्चों. That is the question. हरिका, क्वेश्चन देख के डर लग रहा है? Not exactly, sir, but yeah. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? Yes, sir. तो जब भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं इन द क्वेश्चंस ऑफ ऐसे कंस्ट्रेंट मोशन में ना, तो आप पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व नहीं करना है, दैट वुड जस्ट ऐड टू योर कॉम्प्लिकेशंस, इट्स गोना मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो पहला काम है हमारा जो कि हम ग्राउंड फ्रेम से इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। तो कहां से करें? शुड आई सिट ऑन द स्फीयर? नहीं। Should I sit on the wedge? Yes. हमेशा वेज के फ्रेम से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। एक बात नोटिस करेगा, मैं वेलोसिटी दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू द वेलोसिटी, मैंने कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, उसके लिए अपने को सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। बट सिंस इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज अ इनर्शियल फ्रेम, तो अपने को सूडो फोर्स का यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। हाँ बच्चों, बट द सेम क्वेश्चन वुड अपीयर टू यू विद द एक्सेलरेशन, और जब भी एक्सेलरेशन आएगा हम उसको पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसलिए मैंने अभी वेलोसिटी रखा, मैं आपको बस बता रहा हूं, गिविंग द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ दैट। अब मेरी बात समझो, लिसन टू मी केयरफुली। इफ आई ऑब्जर्व इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेज बी, तो पहले मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बी। बी की फ्रेम से देखें क्या होता है, इसका मुझे आंसर चाहिए आप सभी से। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। इफ आई स्टैंड ऑन दिस एंड लुक एट दिस स्फीयर, हाउ वुड यू ऑब्जर्व दिस ब्लॉक, सॉरी दिस स्फीयर्स मूवमेंट? आपको इस स्फीयर का मूवमेंट कैसा लगेगा? विल इट बी वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली, कैसा दिखेगा आपको? कौन बताएगा मुझे? टेक योर गेसेस, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू स्टैंडिंग ऑन दिस, what would be your observation about the velocity of the sphere? कैसा दिखेगा आपको? इमेजिन करो। So it will be anti-clockwise. नहीं नहीं, इट इज नॉट रोटेटिंग, रोटेशन नहीं है, इट इज Okay. रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आप इस पे बैठे हो ना, यही तो चाहिए मेरे को इमेजिनेशन। यू आर सिटिंग ऑन दिस, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ब्लॉक इज कमिंग डाउन ओनली ना, स्फीयर नीचे की ओर गिर रहा है और तो कुछ दिखेगा नहीं ना आपको। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ दिस वेज बी, क्योंकि द मोमेंट इट स्टार्ट्स मूविंग राइटवर्ड, ये राइटवर्ड जाएगा तो ये नीचे आएगा ना, स्लाइड करेगा राइट, और ये भी जाएगा इस तरफ, और दिस आल्सो विल गो दिस, तो दिस विल गेट सम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एज वेल एज द वर्टिकल डाउन मूवमेंट। हाँ, ये लेफ्ट राइट भी जाएगा, नो डाउट, बट इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस, इट मींस व्हाट, इट बिकम्स एट रेस्ट। इफ आई एम सिटिंग ऑन द फ्रेम ऑफ बी, सिटिंग मतलब क्या होता है, वो रेस्ट पे हो जाता है राइट। द मोमेंट यू गेट दिस एट रेस्ट, तो आपके इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विल नॉट बी सीन, only the vertical movement will be observed by you, right everyone, isn't it? Yes, sir. It will be vertically downward. तो पहला चीज आपको लिखो sphere will have vertical as well as
horizontal movement as well as horizontal movement seen from the ground frame, seen from ground frame, seen from ground frame, but from wedge VB, it will only appear, it will only have vertical motion, right? क्योंकि wedge तो दाएं बाएं जा नहीं रहा है, because you're standing on the wedge, it means that becomes at rest. So when looked upon from the wedge B, sphere will appear to fall vertically downward. The sphere would appear to fall vertically downward. So the frame of, from the wedge B, it will only have vertical motion in downward direction. In downward direction. I believe you guys are walking with me. आपको मेरे साथ चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा. अब ध्यान से देखना. So this means, what is the conclusion from this statement? The conclusion is कि in reality this wedge is moving towards right. और अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, listen to me carefully. This is moving towards right. It means आप ना right move कर रहे हो with a velocity of 2 meter per second. और आपको ये जो sphere है वो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है सिर्फ. That means even this sphere has a velocity 2 meter per second rightward, then only it will appear to be at horizontally rest and only vertical motion would be there. Agree करते हो बच्चों मेरे बातों से? आप दो व्हीकल साथ में जाएंगे with the same speed, तभी तो वो horizontal movement zero दिखेगा. Relative motion concept भूल गए? तो for this person, if the sphere is appeared or the sphere appears to fall vertically downward only, despite the fact that this person is also moving towards right with a velocity of 2 meter per second, which means his sphere must have a horizontal velocity equal to the man's velocity, equal to the wedge velocity. It means the horizontal component of the velocity of the sphere should be 2 meter per second. ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. और आपको ये Yes, जो और आपको जो स्फीयर है ना, आपको इस फ्रेम ऑफ बी आपको ऐसे दिखेगा, वो गिरता हुआ ऐसे. बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ जाओ तो लिख लो. हम फटाफट अब इसके फ्रेम से देखेंगे जी. वी कैन वॉच इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे बहुत सारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं. यू कैन हैव अ गुड इनसाइट फ्रॉम दिस. ओके, क्विकली नोट इट डाउन, जल्दी से करो, टाइम कम है इसमें. अभी मेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है इसका. कम ऑन, सॉरी, वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है. हॉरिजॉन्टल तो वी हैव गॉट द हॉरिजॉन्टल वन. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. इफ यू गाइस हैव नोटेड इट डाउन, मेरे को जल्दी से बताना. आई एम गोना गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, हो गया. चले आगे, चलो चलें. शैल वी संचित? हाँ संचित, तो ओनली टेक द स्क्रीनशॉट ना, बदमाश कहीं का. चलो, नाउ लेट अस ऑब्जर्व इट फ्रॉम द वेज बी का फ्रेम. राहुल, हैव यू नोटेड डाउन? सोमी, हरिका? Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड. थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा हम लोग का, है ना. ये रहा, देखो. अब इसके फ्रेम से कैसा दिखेगा आपको? हाउ वुड इट अपीयर फ्रॉम द वेज बी? तो भैया ये तो बना लो, पहले स्फीयर बना लो ऐसे ना. ये अच्छा स्फीयर लग रहा है देखने में. ये जो वेज ए है ना, हाँ वेज ए है. दिस इज मूविंग लेफ्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड. ओके, ध्यान से देखना. सो बेसिकली इट हैज अ वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 2 meter per second, already we have found, है ना जी. And if you stand on this wedge, it means this becomes at rest. So this velocity would be imposed on this sphere in this direction only, 1 meter per second, और इस तरफ ही आ जाएगा, है ना. Relative velocity concept, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना. So for this person standing on this wedge B, it will appear to him that it is moving at 3 meter per second towards right.
इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा बच्चों दैट वुड बी 3 मीटर पर सेकेंड फॉर द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द वेज ए। और ए एंगल दे रखा हमने 30 इन द क्वेश्चन, ए एंगल हमने दे रखा है 30। अच्छा, इसके फ्रेम से, फ्रॉम दिस फ्रेम इसको कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर टू हिम दैट इट इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, है ना जी, इट इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 3, वर्टिकल डाउन मेरे को निकालना है, वर्टिकल डाउन, बट वर्टिकल डाउन निकालना है। अब ना यहाँ पे दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तब काम हमारा बहुत आसान हो जाता है बच्चों। tan of 30 degree should be how much? Tan of 30 degree should be Vy upon Vx. Vx is how much? 3 meter per second. Tan 30 is 1 upon root 3. That is going to be Vy upon 3. So Vy should be equals to how much? 3 upon root 3 would be 3 upon root 3 should be just root 3. So we have got the velocity of the sphere in the vertical direction is root 3 meter per second. Downward. तो रिजल्टेंट निकालने में कोई मुश्किल अपने को है नहीं, तो रिजल्टेंट देख लो, इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 horizontally because 3 is from the frame of wedge, but with respect to ground it has 2 right side, downward कितना है जी, √3। तो रिजल्टेंट कैसे दिखेगा मेरे को, it would appear to me from the ground frame as if it is coming down in this direction। तो कुछ एंगल बना लो इसका, किसी एंगल पे वो नीचे की ओर आ रहा है, लेट्स सपोज 30 डिग्री रहेगा, ऑब्वियसली इट वुड बी 30 डिग्री, है ना। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, v of sphere with respect to ground, so velocity of sphere with respect to ground should be how much, square of this 3, square of that 4, root of that, so that should be √7 meter per second। so velocity of the sphere with respect to ground should be √7 meter per second। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार रिवाइज करना, ऐसे बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास कराने को, और मैं उसको एज अ डिस्कस्ड मैं उसको अलग से करवाऊंगा। आई एम गोना मेक इट डू सेपरेटली। सो या दैट्स इट फॉर द वेज वाला कंस्ट्रेंट। वी गोना सी मोर क्वेश्चंस, उस पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, बट नाउ वी आर क्विकली गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सूडो फोर्स। तो आई एम श्योर यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस, इसको नोट डाउन कर लो, वी गोना गो टू द सूडो फोर्स।